हर दिन को कैसे पावरफुली अकम्प्लिश कर सकते हैं चीजों को, आज वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. सो हमने लास्ट वीक जो सेशन था दैट वाज अबाउट मैजिक चेक, which was about money, right? And the major concern, if you look at the people around you and you look at the world at large, you will see तो सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली चीज है वो है पैसा. Wherever there's a lack of money, lots of other problems seep in. तो हमने पिछले हफ्ते बात किया था how to attract money into our life and how money comes in different forms and through different avenues. कि पैसा जब हमारे अकाउंट में आता है सिर्फ वैसे ही नहीं होता है. पैसा वो भी एक जरिया है. आपको कोई गिफ्ट देता है वो भी एक जरिया है पैसे का. Somebody buys you dinner, lunch or coffee is also money coming to you. क्योंकि अगर वो किसी और ने नहीं पे किया होता तो आप पे कर रहे होते. So if somebody else is paying for that, that means you're getting money. Somebody is giving you lift in the car is money. Like for example, I went to somebody's house and I took a cab. Now I paid for the cab, but while coming back, one of them, one of the people in the house was traveling towards my area. He said, "Aap mere saath chaliye." And I came with that person in his car. तो उसका तो पेट्रोल लगा, उसकी गाड़ी पे तो खर्चा हुआ, but I came free, which was like money. When we buy things and we get discounts, 10% discount, 15% discount, 20% discount, that 20% is a money given to you. क्योंकि otherwise तो आप पूरा पैसा पे करते ना. मनी बैक होता है ना, पेटीएम से कुछ पे करो तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा. दैट इज ऑल्सो मनी. पर हमने कभी ऐसे सोचा नहीं कि दिस इज ऑल्सो मनी कमिंग टू अस. हमारे लिए पैसा वही है जो हमारे हाथ में आता है या जो हमारे अकाउंट में आता है. सो देयर वाज अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मनी इन द चैप्टर व्हिच वी कंप्लीटेड लास्ट वीक. कि पैसा सिर्फ पैसे करेंसी के रूप में नहीं आता, कई तरीकों से आता है. And we were supposed to pay gratitude for anything and everything which we receive in that form. अगर हमें कहीं से डिस्काउंट मिला तो we were supposed to be celebrating that, feeling happy about it. Because happiness plus gratitude creates a magnetic force. जब आप खुश होकर एक्साइटमेंट के साथ ग्रैटिट्यूड देते हो तो उसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती है. So you become a magnet to good things in life, magnet to abundance in life. So anytime you receive any discount, anytime you receive any gift, anytime you get unexpected money, you're supposed to celebrate it, feel happy about it. You can do anything like wow or happy about it. Yes, something like that, which expresses your happiness. And you're saying thank you for that. That attracts money into your life. That attracts abundance in your life. And then we wrote check, the check of universe. I think I had shown you the check, but I'll show you again. And I shared it in the group also. This is a kind of check. This is actually printed by one of somebody known to me who had printed and gifted it to me. But the universal check, you have seen it in the group. So there's a check which it says from the Bank of Universe, and you're supposed to write your name on it, put the date and the amount. Abhi amount kya tha? Amount was for something which you want to buy for yourself.
Like it could be for a mobile, it could be for a wallet, it could be for a purse, could be for a winter hai to jacket, you know, maybe, you wanted to buy something for the house, microwave खरीदना है या गीजर खराब है, गीजर नया लेना है, anything. And start small. Start with a smaller amount. And write that amount कि वो जितने का आएगा. For example, मान लो गीजर आपका 5,000 का आना है. For example. So you write 5,000 rupees. You write your name, like I would write Jagjit Kaur, and I would write the date. आज की जो date है. So I would write, is it 15th or 16th? It's 16th today. So 16th of January 2024. That is the date. And then I will write the amount in words and figure. 5,000 rupees. And 5,000 rupees there. That's all you're supposed to write. It is already signed by the universe. It's a universal check from the Bank of Universe. When you're supposed to write 5,000 rupees, that means money is a means to an end. पैसे से आप कुछ खा नहीं सकते, पैसे को ओढ़ नहीं सकते हो, पैसे से पानी नहीं गर्म कर सकते हो. For that, you need to buy things. And to buy things, you need money. So money is a means to an end. Yeah. So means to an end है तो आपने सिर्फ पैसा लिखना है कि जितने की वो चीज आएगी. And once you have written that on the check, what were you supposed to do? You were supposed to look at the check and imagine as if you have already received it. For example, if I'm asking for a geyser, when I'm looking at the check, looking at the amount, I'm imagining that I'm going to the shop and I've selected the geyser I wanted to buy, and I have selected the color and the model, and I'm paying for it, and I'm getting it at home, asking the plumber to fix it, and somebody is fixing it. And after that, when I'm opening the tap, hot water has started coming. So when I'm imagining all this, visualizing all this, I'm feeling happy about it, that it has already happened. So this is how you're supposed to do that. And keep that check in front of you somewhere, where you can see it most of the time during the day. जब भी आप cross करो, आपके सामने दिखाई दे. First thing in the morning, look at it and imagine that you already received that, what? Geyser, not the money. Now, it can come in the form of a money also. हो सकता है कहीं से आपको 5,000 रुपए मिल जाए. हो सकता है आपका husband आपको 5,000 rupees दे दे. या आपको गीजर ही कोई गिफ्ट कर दे. I remember I always wanted to buy an air fryer. मैं खरीदना चाहती थी. And I wrote it. I wrote the amount for the air fryer. And it was my birthday, and my niece and nephew, they gifted me that. So I got what I wanted. पैसा नहीं मिला जो मैंने वहां लिखा था to buy that, but I got that product as a gift. It costed them money, but I got it. Right? So it can come in that form also. So that was our chapter for last week. I just wanted to give a recap so that if you have forgotten about it, you've not done it, you can do it again. Today we are going to talk about, there's so many things we want to do, accomplish during the day, पर वो रह जाती है. वो रह जाती है. क्योंकि अभी तक जब तक हमने प्रैक्टिस किया है, we have realized that gratitude has become our friend. वो हमारी सुनता है. यूनिवर्स हमारी सुनता है. हम जो चाहते हैं वो हमारी उस चीज को अचीव करने में हेल्प करता है. या सो ग्रैटिट्यूड इज अ फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड है हमारा. अभी पूरी तरह से बना नहीं है, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दैट बॉन्ड विद द ग्रैटिट्यूड टू बिकम आवर बेस्ट फ्रेंड. हम जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे, हम जितना उसके साथ रहेंगे, उतना ही वो हमारा प्रगाढ़ दोस्त मित्र बनेगा. बेस्ट फ्रेंड ऐसे तो बनते हैं ना, जब हम ज्यादा टाइम साथ बिताते हैं. सो वी आर बिकमिंग फ्रेंड्स विद ग्रैटिट्यूड, एंड ग्रैटिट्यूड इज अ फ्रेंड you can lean on anytime.
वो कहते हैं ना, एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जरूरत के टाइम काम आए। जब आपको लगे कि मैं मुझे कुछ हेल्प चाहिए, you always know that this person is going to help me always. So gratitude is that one friend. We can always lean on that friend. तो अभी आज हमने उसको किस तरह से, उस फ्रेंडशिप को यूज करना है अपने काम के लिए, ग्रैटिट्यूड को किस तरह से लेवरेज करना है टू डू थिंग्स व्हिच वी वांट टू डू इन लाइफ. I don't know whether you have worked in, how many of you have worked in corporates and you have been making this to-do list every single day. I did that when I started working. My boss taught me that this is how you're supposed to schedule your day, and आप जरूर जो भी important चीजें उनको लिखो, आज आपको क्या क्या करना है and all. Because I was just fresh out of college. Practical knowledge तो थी नहीं ना, theoretical knowledge थी. So he told me how to go about it. And from that time till the time I was working, I used to make my to-do list every day. जो हो जाता था उसको स्ट्राइक कर देती थी, जो कुछ नया आ जाता था ऐड कर देती थी, यही करती थी मैं. तो आज हमने क्या करना है, हमने वो लिस्ट बनानी है जो काम हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे. It happens ना, sometimes you feel there's too much to be accomplished in a day, और 24 ही घंटे हैं, कैसे कर ले, ये भी रहता है, वो भी रहता है. फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को भी देखना है, खाना भी बनाना है, गेस्ट भी आ रहे हैं, घर को भी ठीक ठाक करना है, अभी तो मुझे तैयार भी होना है, नहाना भी है, शाम को शादी में भी जाना है. There's so much to do in one day and you don't know how to go about it. So situations like that. Then there are situations like that, that there are certain things which we need to do, but हमें पता नहीं कैसे करना है, इसलिए हम उसको टालते चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में वॉलपेपर का कुछ बीच में सीपेज आया था, तो वॉलपेपर कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा उसके जॉइंट्स खुल गए. एंड आई एम लुकिंग फॉर समबडी हु कैन कम एंड फिक्स इट. आई बीन आस्किंग पीपल, आई कॉल्ड कपल ऑफ द गाइज एंड दिस, हम आएंगे, एंड आई हैव नॉट बीन परसुइंग इट. हाँ, हो जाएगा, कोई नहीं, इस बाद में करा लेंगे, नहीं आया कोई बात नहीं, किसी और को पूछ लूंगी बाद में, करते 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 इट्स बिन 6 months. So many time it happens that we keep pushing things कि हाँ बाद में कर लेंगे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करना है. So there are things like that in our life. Then there are things like पूरा दिन बहुत काम है, मुझे लगता है कि हाय कहीं से कोई हेल्प मिल जाए, मैं 10 मिनट बैठ जाऊं, थोड़ा रेस्ट ले लूं, एक कप चाय ही बना के पी लूं. आई विश देयर वाज समबडी हु कुड हेल्प मी. ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है. और देयर कुड बी सिचुएशंस लाइक इन ऑफिस और एट होम ऑल्सो, कि कुछ ऐसा काम मिल गया जो आपको पता ही नहीं करना कैसे है, समझ ही नहीं आ रही है, कुछ नया अचानक से आ गया. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग इन ऑफिस एंड योर बॉस गिव्स यू अ न्यू प्रोजेक्ट एंड यू डोंट नो ABCD अबाउट दैट प्रोजेक्ट एंड ही इज आस्किंग यू टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, और आपको समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ. कितनी बार ऐसे होता है ना कि हमारे पास इतना कुछ होता है करने के लिए, समझ नहीं आता कहाँ से, मतलब और छोड़ नहीं समझ आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ इसकी. So similarly, maybe there is something which you don't know how to do and where to start. घर पे भी हो सकता है. I remember when my father passed away, the house was in his name. I wanted to get it transferred into my name because I didn't know how to go about it. I kept pushing it, pushing it, pushing it. कैसे करूं, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, किससे पूछूं, क्या, कौन बताएगा मुझे, क्या प्रोसीजर होता है. I kept pushing it, pushing it, pushing it because I didn't know how to go about it. 11 years, 11 साल निकल गए और मैंने उसको नहीं कराया. Then when we started doing this practice and I wrote it in my magical to-do list, and what book says is, जब आप इसमें लिखते हो ना, तो gratitude की practice कैसे help करती है? It actually moves people, situations and circumstances to help you. अब वही हुआ मेरे साथ. I met a friend and I spoke to that person. I said कि यार मकान अपने नाम पे ट्रांसफर कराना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे करूं. एंड 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, कर ही नहीं पाई हूँ. अभी तक नहीं कराया तूने, करा लेना चाहिए था. मैं तो समझ ही नहीं आ रहा ना कैसे करूं,
मुझे पता ही नहीं क्या करना है. तो he said, okay, I'll give you one number. You speak to this person. इसके ना काफी जान पहचान है DDA में ना, तो he will be able to guide you. Circumstances, people, all got aligned. And I spoke to that person. And he guided me. He was such a wonderful person. His name is Amit. And he helped me so much. He just guided me कि आपने ऐसे लेटर बनाना है, ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और आप जाके DDA में फलानी खिड़की पे जाके जमा करा देना. And after that, he called me up. I said, कुछ जवाब आया? I said, नहीं. He said, now go and give a reminder. After that also, he told me, go and give a reminder. I gave 2 reminders. And within 3 months, without paying any money to anybody, my house got transferred into my name. And I also got it freehold bhi kara liya maine. Sab ho gaya. Why? Because I wrote it in magical to-do list, which is the practice today we are going to do. So, आपके ऐसे कोई काम जो आप पूरे दिन में नहीं कर पा रहे हो और आपको नहीं समझ आ रहा है कब होगा, कैसे होगा, you can write down that. There's things like which you want to do it, but since you don't know how to do it, you keep pushing it. But ultimately उसको करना ही पड़ेगा. आप उसको लिख सकते हो. कुछ नया प्रोजेक्ट है, कुछ नया काम है जिसके बारे में ABCD नहीं मालूम, पर आपको करना है वो, because that will give you growth in your career or growth in your learning or your personality. You can write that. तो ऐसे आपने list बनानी है of things which you want to accomplish. Or maybe you're looking for a teacher or a tuition teacher for your son or a daughter, जिसको आप चाहते हो कि उसको मैथ्स का अच्छा टीचर मिल जाए, पर आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से मिलेगा, कौन सा अच्छा टीचर है, कितने पैसे लगते हैं. And suddenly you meet your बच्चे के आपके कोई क्लासमेट है, उसकी मदर आपको रास्ते में मिल गई. उसने बोला क्या हाल है यार, बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा, इसका ना मैथ्स की ट्यूशन लगानी है, एंड आई डोंट नो वेयर टू लुक फॉर द टीचर. शी सेड, ओह, मैंने अभी भी लगाई है अपने बच्चे की, एंड शी इज सो गुड. मतलब इसके अभी से इतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस हो गया, इतना अच्छे इसके मार्क्स आए इसके मैथ्स में इस टाइम, एंड शी इज वेरी इकोनॉमिकल, मतलब ज्यादा पैसे नहीं ले रही है वो. गॉड सेंट. एंड यू सेड, ओके, गिव मी अ नंबर, आई विल आल्सो स्पीक टू दैट टीचर. तो वो मिल गया. Maybe you're looking for a good dentist. Like, for example, I'm looking for a good Ayurvedic doctor because I'm sick and tired of allopathy. I really want कि मैं अंदर से अपनी cleansing होए मेरी और अंदर से strengthen होए body. So I'm looking for somebody in Ayurvedic. Now I'm going to write it in my to-do list today. And I'm 100% sure I'll find a way. कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ clue, कुछ ना कुछ direction मिल जाएगी where to go and whom to meet. So you have to write down all those things, make a list of it, and write on top of that magical to-do list. Yeah. And उसको करने के लिए क्या करना है, उससे पहले मैं आपको एक इस बुक में जो एक एग्जाम्पल दिया हो उसको शेयर करूंगी. So Rhonda's daughter, Rhonda is writing about her daughter, that her daughter one night was coming back from a dinner. कहीं डिनर पार्टी से वापस आ रही थी, एंड घर आके उसको रियलाइज हुआ उसका वॉलेट कहीं गिर गया. एंड शी ट्राइड लुकिंग फॉर इट, ढूंढा, जिस रेस्टोरेंट में खाना खा के आई वहां जाके वहां पूछा, जिस कैब कंपनी के साथ आई थी उस कैब वालों को फोन किया, पुलिस स्टेशन में लिखवाया, बट शी कुडंट फाइंड इट. हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हाय खो गया, मेरा सब कुछ उसमें था, मेरे आई कार्ड्स भी उसमें थे, मेरे क्रेडिट कार्ड्स भी उसमें थे, मेरे पैसे भी उसमें थे, पता नहीं यार किसने ले लिया, कहाँ गिर गया, मेरा तो वॉलेट ही खो गया. हम लोग क्या करते हैं, वी गेट इनटू दैट काइंड ऑफ नेगेटिव मोड. बट व्हाट डिड शी डू? शी ट्राइड इट एवरीवेयर, शी डिडंट फाइंड इट, बट शी सैट डाउन एंड imagined, visualized it that she's received her wallet back and she's opened it and saw everything intact. So she just kept visualizing that and paying gratitude to it. क्या हुआ उससे? So there was a farmer जो सुबह सुबह 4-5 बजे उसके घर के सामने से निकल रहा था, उसकी बेटी के घर के बाहर ही उसको वो वॉलेट मिला, and he looked around, he couldn't find anybody.
एंड उसने उसमें ढूंढने की कोशिश करी कि भी कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो लेट मी जस्ट कॉल अप एंड टेल देम कि ये आपका वॉलेट मेरे पास है एंड ऑल, बट देयर वाज नो कांटेक्ट नंबर. हाउ कम? बिकॉज शी हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम अब्रॉड, और उसमें उसके कांटेक्ट नंबर वाला कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा कागज नहीं था. लाइक फॉर एग्जांपल, whenever we are traveling abroad, we don't carry our ID cards ना, पासपोर्ट होता है बस. अपना आधार वधार सब हम लोग घर पे छोड़ के जाते हैं कि बाई चांस खो ना जाए. Like recently when I was traveling to Dubai and I went to KL, I did not carry my ID proofs. Na? I just carried my passport. I carried some currency, कुछ इंडियन रुपीस लेके गई, बाकी वहां की करेंसी थी, एंड अपना क्रेडिट कार्ड लेके गई थी, और एक अपना प्रायोरिटी कार्ड जो मुझे एक्सेस देता है लाउंज में. इसके अलावा मेरे वॉलेट में कुछ नहीं था ना. इफ somebody wants to know, अगर वो कहीं रह जाता है तो किसी को नहीं पता कि वो मुझे कैसे कांटेक्ट करेंगे, अब किसी और देश में. So similarly, when she was traveling abroad, she was not carrying anything. तो उसके वॉलेट में कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ था ही नहीं. So this guy carries that wallet with him and चला जाता है वो. And this Rhonda's daughter दिन में कितनी बार वो उस चीज को विजुअलाइज करके, and she's paying gratitude for it. The farmer is walking on his farm and he's getting this nagging feeling कि उसके वॉलेट का क्या करूं, वॉलेट का क्या करूं. He takes out the wallet. लास्ट टाइम मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कुछ. उसको उसमें एक कागज मिला जिसपे कोई नाम था, सम मेल नेम, और उसके क्रेडिट कार्ड के ऊपर नाम तो था ही ना, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर तो होता नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड के ऊपर नाम था. तो उसने उस नाम को उस आदमी के नाम के साथ मैच करके डायरेक्टरी इंक्वायरी में फोन किया. आप में से कुछ लोगों को याद होगा 197 होता था MTNL का, जिसपे हम कॉल करके नंबर्स पता करते थे कि फलाने एरिया में इस नाम के इस एड्रेस के बंदे का नंबर चाहिए हमें, एंड दे यूज्ड टू गिव अस नंबर. और एक इतनी मोटी सी डायरेक्टरी होती थी, येलो पेजेस भी होते थे, और अलग से एक डायरेक्टरी होती जिसमें अल्फाबेटिकली सबके नाम होते थे, उनके नंबर्स होते थे. Similarly, that farmer called up the directory inquiry and asked for the number of that particular name. जो एक मेल नेम मिला उसको, उस मेल नेम का उसने नाम ढूंढने की कोशिश करी, नंबर ढूंढने की कोशिश करी. So the directory inquiry person said there is only one name listed in that one number listed in that name, and that number belonged to Rhonda's ex-husband. उस लड़की के फादर का नंबर था. And from that number he could manage to get the number of the lady who had lost her wallet, and he called her up and told her कि उसका wallet उसके पास है. And magically उस wallet को जब वापस किया उसने तो it was intact, there was nothing missing. And Rhonda and her daughter was surprised to know कि इसको उस इंसान का नंबर मिला कैसे, because that was an unlisted number, that's a private number. And इन लोगों ने जब भी डायरेक्टरी इंक्वायरी से वो नंबर पता करने की कोशिश की है, they could never find it because they said इस नाम से कोई नंबर ही लिस्टेड नहीं. And that is called magic. बोलते हैं ना, शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपका वो काम करने में लग जाती है. तो शिद्दत से उसने ग्रेटिट्यूड दिया for that wallet. So everything, people, circumstances, everything aligned. Or that farmer got the number of her father, which was not listed there. And उसके बाद भी उन्होंने जब कॉल करके वो नंबर लेने की कोशिश करी, तो डायरेक्टरी इंक्वायरी में से उनको वही जवाब मिला कि there is no number listed under this name. ऐसा कैसे हुआ? That is called magic. और ये मैजिक कब होता है? जब हम यूनिवर्स के वो मैजिकल पावर में टैप करते हैं. So today, what we are going to do is we are going to tap into that magical power of gratitude to find solutions. प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉब्लम पे ही फोकस करते हैं. हमने कहा ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, we are talking about problems. Whenever we are faced with any situation, there could be a medical situation, there could be a financial issue, there could be a relationship issue, हम लोग किस पे फोकस करते हैं?
we focus on the problem. And where attention goes, energy flows. तो जब हम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ही तो बढ़ेगी. But now today onwards we will be focusing only on what? We will be focusing on the solution. अगर हमें टाइम चाहिए तो टाइम, जो काम हमें करना है वो काम करने के लिए रास्ता, guidance, you know, if you are looking for something and we don't know how to find that person, हमें डेंटिस्ट चाहिए या कोई हमें ट्यूशन के लिए चाहिए या हमें कुछ अच्छा डॉक्टर चाहिए, we are just looking for something which we are not aware to find, we will just write it in our to-do list, magical to-do list today, and we will tap into the power of magic of gratitude to find the solutions to it. And this works every single time. Every single time I have done this practice, it has worked. And people who have been participating in my programs, they also vouch for it कि अगर वो करते हैं तो solution मिलता ही मिलता है. So today we are going to focus on solution. So what are you supposed to do is, you're supposed to sit down and write down all the tasks which you really want to get accomplished. हो सकता है आपको नहीं मालूम कैसे करना है, हो सकता है आपके पास टाइम नहीं है करने के लिए, हो सकता है आपको हेल्प चाहिए कुछ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर में इतना काम है कि मेरे पास फुर्सत ही नहीं है कि मैं बैठ के 5 मिनट आराम से बैठ जाऊं. एक काम खत्म होता है दूसरा, दूसरा खत्म होता है तीसरा. देखा ना आपने होम मेकर्स को देखा ना करते हुए, सुबह उठते सबसे पहले चाय बन रही है, उसके बाद ब्रेकफास्ट का काम हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं सब लोग, उसके बाद थोड़ा घर वर ठीक किया, नहा धो के निकले, उसके बाद लंच का टाइम हो गया, लंच खत्म किया, कोई आ गया या ग्रोसरी लेने जाना है या कुछ सामान लेने जाना है, एंड by the time you come back it's tea time. You have tea and then you start making dinner. You know, the whole day is like a machine की तरह आप लगे हुए हो, and you're just waiting कि हाय कि मुझे 5 मिनट तो मिल जाए कि मैं बैठ जाऊं आराम से, दिमाग भी थोड़ा सा शांत हो जाए, मेरा दिमाग पे कुछ ना कुछ चले जा रहा है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, there's so much to, you feel overwhelmed at times, there's so much to do. So that could be one reason. Yeah, there could be reason that you don't know how to do that particular thing and you don't know whom to reach out to. Yeah, जैसे अगर मुझे अपना वॉलपेपर का कराना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किसको फोन करूं, जिसको कर चुकी हूँ वो आया ही नहीं, 2 बार कर चुकी हूँ, अब मैं आई हैव गिवन अप. पर गिवन अप से क्या काम हो जाएगा? नहीं होगा. तो आई एम गोइंग टू राइट इट इन टू डू लिस्ट टुडे कि इसको कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर अ बॉय फॉर वनीता, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से ढूंढूं उसके लिए लड़का, बिकॉज शी इज फ्रॉम झारखंड एंड वी आर लुकिंग फॉर समबडी, यू नो, अच्छा लड़का हो, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. यू नो, खाता पीता ना हो, जिसको दारू की आदत ना हो, अच्छी थोड़ा बहुत ढंग का कमाता हो, ताकि यू नो शी इज कंफर्टेबल, a person who is respectful towards women. You know, I'm looking for that kind of a guy. Where do I find it? नहीं समझ आ रहा. So maybe that is one thing I will write in to-do list today. तो आपको देखना है ऐसी कौन सी चीजें हैं. It could be 4, 5, 6, maybe 10, maybe just 3. But minimum 3 होनी चाहिए, which you will write in the list of to-do list and write it as magical to-do list. अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको करना है visualization. On those 3 things, just sit down and take one and just imagine as if it has already happened in the present. For example, if I'm talking about my wallpaper and I'm imagining that the guy has come and he's fixing the wallpaper and my room is looking so nice, fresh and clean, you know, and I'm imagining that, I'm feeling so happy about it. कितना अच्छा लग रहा है ना कमरा, कितने दिन से ना लटका हुआ था काम, ये हो गया, and it's looking so nice. Yeah, the room is looking so good. Yeah, so I'm feeling happy about it. So 1 minute on each of them you're supposed to spend. तो 3 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे. तो 3 जो सबसे ज्यादा आप चाहते हो कि ये वाले काम मेरे हो जाएं, तो बस तसल्ली हो जाएगी. So those 3 things you write it on top. जो आप लिस्ट बनाओगे उसमें आपने तीनों को सबसे ऊपर लिखना है, and then sit down and
spend 1 minute on each of them, imagining, visualizing as if it has already happened and you're feeling happy about it. And you will be surprised कैसे रास्ते निकल के आएंगे, कैसे यूनिवर्स विल अलाइन एवरीथिंग. कहते हैं ना वो ग्रह भी सारे बदल जाते हैं, सबकी दिशाएं बदल जाती हैं, सब सेट हो जाता है आपके लिए. वही हो जाएगा. You will find some solution coming from some direction. Unexpectedly, maybe you will get some message on WhatsApp itself. Maybe you will meet somebody who will be able to tell you how to go about it. So on each one of them, you are supposed to spend 1 minute on the solution. वो हो गया है and you're feeling happy about it. And you will be surprised how this magical practice of gratitude will help you find solutions. जो कितने टाइम से पेंडिंग चीजें चल रही है ना, वो सारी की सारी आपकी होनी शुरू हो जाएंगी. And if you are able to practice this today and you accomplish whatever you want to, and you are able to find solutions to the issues which you are not able to find, and you are able to get the guidance from the universe how to go about it, you can do it every single day. जो हम अपनी to do list every single day office में बनाते थे, so you can do it for you, your own life. Maybe you can write one every day. What is that one thing you want to get accomplished today? After doing today's practice of 3 days, of 3 things. ये 3 चीजों के लिए जब आप आज करोगे, तो you will get a hang of it कि करना कैसे. So you have to pay gratitude to this. Thank you, thank you, thank you. That I have, it's looking so beautiful. Things have happened, or I've got the best, Ayurvedic doctor, and I'm visiting her, and I'm feeling so good after taking medicine or consulting her and all. So when you start feeling like that, paying gratitude and focusing on solutions will start showing up. And when you practice it today and you know how to do it, you can do it anytime. Every time you're faced with situations like that, कि समझ नहीं आ रहा करना कैसे है, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा सब कुछ. For example, बेटी की शादी है या घर में शादी है, and you're not able to find a banquet hall, you're not able to find the kind of a venue which is fitting into your budget. You can write that. Anything which is you're finding that it is troubling you and you're looking for a solution, just write it. Every single day you can do this practice if you get the hang of it कि करना कैसे है. और आज हमने यही सीखना है. तो क्या करना है? ग्रेटिट्यूड को अपना बनाना है बेस्ट फ्रेंड. अभी तक जितनी प्रैक्टिस की है, कुछ फ्रेंडशिप हुई है. हेलो, हाय, हाउ आर यू, नाइस मीटिंग यू, यहीं तक पहुंचे अभी हम. तो वो जप्पी वाली फीलिंग नहीं आई है अभी. that the moment you see आपकी बाँछें खिल जाएं, you feel so happy to see that friend. वो अभी नहीं आई है क्योंकि हमने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है. But once we start doing that, we become those huggy puggy friends with gratitude. Then we can lean on it, and we are learning how to lean on it. So today's chapter is about how to lean on your best friend, gratitude, to do things which are stuck, जो नहीं हो रही हैं या जो नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, जानते नहीं करना कैसे है. उन सब चीजों के लिए you can make that list today and lean on your best friend, gratitude, to find solutions. So this is about today's chapter, and it is it's a very beautiful and wonderful chapter. अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको एहसास होगा कि सच में ग्रेटिट्यूड आपका बेस्ट फ्रेंड है, एंड कभी भी आपको ना छोड़ के नहीं जाएगा और आपको कभी भी धोखा नहीं देगा. ये यू कैन ऑलवेज वाउच फॉर इट कि ये मेरे साथ हमेशा है. ऐसा एक फ्रेंड हमेशा चाहिए होता है ना. आई रिमेम्बर दैट एक अंकल जी थे हमारे, तो ही यूज्ड टू से दिस कि आपकी जिंदगी में, मतलब व्हेनेवर आई यूज्ड टू बी विद माय बेस्ट फ्रेंड ना, तो ही यूज्ड टू से यू आर वेरी लकी. आपके पास एक भी ऐसा दोस्त है ना जिसके ऊपर आप आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो,
और जो आपके हर दुख सुख में आपके पास खड़ा है ना, आप बहुत लकी हो. सो वी ऑल आर वेरी लकी कि हमारे पास दुनियादारी वाले दोस्त बेशक हो, एक दो हो चाहे ना हो, हमारे पास ये सबसे अच्छा दोस्त है. ये हमारा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है. कौन? Gratitude. This practice of gratitude. And we can always, always, always lean on it कि ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हमारे हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन तक हमें पहुंचाएगा. So that is what I wanted to create for today. I hope you find it useful and आप अपनी आज लिस्ट बनाएं and राखी जी, मनीष जी, समीना जी, शबाना, I really want all of you to make that list today and work on it. आपके पास पूरा एक हफ्ता है. आप चाहो तो हर रोज ये लिस्ट बना सकते हो. एक नहीं, 2, 3, जितनी भी चीजें आप रोज करना चाहते हो, जिसको आपको लगता है कि कैसे होगा, सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा या थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है. So just write magical to-do list and just spend 1 minute on it. Just imagining, visualizing as if it has already happened and you're feeling happy and grateful for it. Practice करके देखो. कौन कौन करना चाहता है? मनीष जी, राखी, समीना, शबाना, कौन कौन करने वाला है ये प्रैक्टिस आज? Yes, we are going to do it. Jagjit, me also. Anji? Somebody was saying something? Shabana, somebody said something, na? I couldn't hear it. Samina ji was saying something. Maybe this one. Anyone who would like to share anything? So people who have been attending this Tuesday sessions with me, I really want, some of them to just share. Have they found it useful? Have they used it? Have they practiced gratitude? I would love to hear from you. Rajvin. Hi, Rajvin. You have to unmute. Rajvin, you are on mute. Yeah, please. You're again on mute. I was actually very, very happy because I won the title of Miss Amazing Malaysia, Miss Beautiful Smile. Wow, congratulations. Congratulations. So although people are like bullying me, they pinch me, they bully me, but I just wear my scroll and to protect myself. Yeah. The scroll makes me feel good. And I've been practicing gratitude from whatever I do. Now I'm a member of Laughter Yoga and Johor Bahru Happy Joyous Club, and I'm organizing a conference for the Laughter Club. Okay. So I'm grateful. So I can't wait to start back my sessions with Shabana and Nupur in February, because but your sessions have been good because whatever I visualize, it comes true. Yeah. So visualization has a lot of power. So once we start visualizing things and because once we visualize it, the feelings start coming, as if it has already happened and you feel happy about it. And when you feel happy about it, law of attraction says like attracts like. If you send those vibes, those feelings of happiness, happy things will come to you. And that is why this visualization is very important. And it really helps in manifesting whatever you want to manifest in your life. And I'm so happy for you and so proud of the fact that you won these awards and titles. And
looking forward to your sessions in February. I too would love to attend them. Thank you so much. Manish ji, would you like to say something about the sessions? I believe. Yeah, ma'am. This was a really good session, and whatever you have told, like never thought about um, negative thing. तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हम लोग जनरली प्रॉब्लम में ही फंसे हुए रहते हैं कि वी हैव लॉस्ट वैलेट और वी हैव लॉस्ट समथिंग, तो ये कैसे मतलब कि ये अब क्या होगा, बट वी नेवर थॉट कि अब हमें व्हाट वी हैव टू डू, मतलब अगर समथिंग हैज बीन हैपन तो वो तो हो चुका है, तो अब उसका व्हाट इज द सोल्यूशन, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देके हम लोग उसी पर आ जाते हैं कि अब कि भाई ये हो गया तो अब आगे क्या होगा। तो दैट इज द वेरी गुड थिंग कि आपने ये डायरेक्शन दिया कि वी हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर और फॉर एक्शन। तो रियली गुड सेशन मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच महेश जी। सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो सोल्यूशन नजर आएगा, प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स ही पड़ती हैं लाइफ में, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वही वापस लौट के हमारे पास आता है। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स ही लौट के और प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आएंगी। बट जो भी हमारे पास है इस वक्त उसके ऊपर अगर हम सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो यूनिवर्स हमें, जैसे मैंने बोला ना, पीपल्स, सिचुएशंस, हर चीज को वो अलाइन कर देता है हमें सोल्यूशंस हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो थोड़ा सा एफर्ट तो हमें भी करना पड़ेगा ना, यूनिवर्स तो तभी हमारी हेल्प करेगा। कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पहली हमने अपनी हेल्प क्या करनी है, हमने ग्रैटिट्यूड में रहना, बाकी यूनिवर्स देख लेगा, बाकी सब उसका काम है। तो अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रख के उस बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी प्रगाढ़ता बढ़ाएं और अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करें। That is what I would like to say today. Yeah, Shabana, would you like to say something? Yes, I would like to say कि now every Tuesday I look forward to. In fact, when I got up today, I was feeling gratitude. Like today is gratitude day. Yeah. So I think I can observe the shift which is happening because of this session. Like, I think I'm more consciously present to gratitude. Not every day, but of course Tuesdays, definitely. Yeah. And of course, occasionally also sometimes I get present. Yeah, we have to practice that. Yeah. So for me, like I am doing that 21 days challenge also these days. So 6:30 also I am doing gratitude, which is for 20-30 minutes. And then on Tuesdays I have two sessions. First at 6:30 and then at 8 o'clock with you guys. So, it gives me so much of, it gives me kind of a power from within. Because the more I practice, the more I also, get benefited out of it. And once we are out of the, structure, life takes over. हम सबके साथ ही होता है वो। जैसे अगर हम ट्यूसडे की आप बात कर रहे हो, that Tuesday you are feeling happy that you're going to do gratitude practice today. And so वो एक दिन जो है ना gratitude के लिए हम दे रहे हैं, that is the beginning of it. Once we start practicing it every single day, life will get transformed. पर वो होता नहीं है, because default mode हमारा वो है ही नहीं ना। तो practice के लिए, इसीलिए अगर हम अभी 18 weeks is a big time. Like we have been doing it for 18 weeks. And we have another, 8 to 10 weeks to complete the whole book. So I am sure it will be, rubbing off on each one of us. कहीं ना कहीं हमें वो gratitude की थोड़ी थोड़ी आदत पड़ेगी. And आगे के chapters जो हैं वो भी बहुत powerful हैं and really helps us to incorporate, imbibe, and make it a habit for ourselves to practice gratitude every single day. And I'm also looking forward to the, the upcoming and forthcoming sessions of gratitude, so that, we all get benefit out of it. Because every time I am also, in this practice with you people, I'm also getting present to it, that mujhe iski practice aur karni hai. Ab jaise to-do list, I'm going to make my to-do list today, and I know what are those 3 things which I'm going to focus on. Yep. So, yeah. So thank you very much, and I will see you next Tuesday.
And till then, keep practicing gratitude. दोस्ती बढ़ाओ अपनी उसके साथ. Handshake से जरा hug तक आ जाओ, huggy puggy करो उसको. And yeah, and make gratitude your best friend. Yeah, so that you can lean on this best friend throughout your life for everything and anything. Yeah. So thank you very much. Have a wonderful day.